इस वीडियो में आपको एक एनिमेटेड इंग्लिश वीडियो क्लिप सबटाइटल के साथ दिखाया जाएगा और उसके बाद उस वीडियो को हिंदी में समझाया जाएगा। This is London, around the year 1888. The city streets are cloaked in a thick fog, and you can see women wrapped in heavy clothing to shield themselves from the cold. Many buildings here have clocks installed on them, ticking away the time. The colors of the buildings vary, some are red, others green, while most are light brown. I find myself drawn to the beauty of London, becoming an adherent of its timeless charm. But even here, there's always a reminder to stay cautious, like someone admonishing you to not get too lost in the foggy streets. It's moments like these that edify the mind, teaching us to appreciate the rich history and culture around us. As I walk down the street, I notice a narrow alleyway leading to two different paths. Choosing the left, I step forward and see horse carriages making their way through the bustling street. Such scenes are a catharsis, helping me imagine the life of 19th century London, full of challenges, yet charming in its simplicity. As I walk, I remind myself of an old adage, patience is the key to success. अब इस इंग्लिश कमेंट्री को हिंदी में समझते हैं। This is London, around the year 1888. This is London, around the year 1888. यह 1888 के आसपास का लंदन है। The city streets are cloaked in a thick fog, and you can see women wrapped in heavy clothing to shield themselves from the cold. The city streets are cloaked in a thick fog, and you can see women wrapped in heavy clothing to shield themselves from the cold. शहर की सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि महिलाएं ठंड से बचने के लिए भारी कपड़े पहने हुए हैं। Many buildings here have clocks installed on them, ticking away the time. Many buildings here have clocks installed on them, ticking away the time. यहाँ कई इमारतों पर घड़ियां लगी हुई हैं, जो समय को दर्शा रही हैं। The colors of the buildings vary, some are red, others green, while most are light brown. The colors of the buildings vary, some are red, others green, while most are light brown. इमारतों के रंग अलग-अलग हैं, कुछ लाल हैं, कुछ हरे हैं, और ज़्यादातर हल्के भूरे रंग की हैं। I find myself drawn to the beauty of London, becoming an adherent of its timeless charm. I find myself drawn to the beauty of London, becoming an adherent of its timeless charm. मैं लंदन की सुंदरता की ओर आकर्षित हो रही हूँ और इसके शाश्वत आकर्षण की एडहेरेंट बन रही हूँ। एडहेरेंट का मतलब है किसी चीज का अनुयायी या समर्थक। But even here, there's always a reminder to stay cautious, like someone admonishing you to not get too lost in the foggy streets. But even here, there's always a reminder to stay cautious, like someone admonishing you to not get too lost in the foggy streets. लेकिन यहाँ भी हमेशा सतर्क रहने की याद दिलाई जाती है, जैसे कोई आपको कोहरे वाली गलियों में ज्यादा खोने से सावधान कर रहा हो। Admonish का मतलब है चेतावनी देना या सलाह देना। It's moments like these that edify the mind, teaching us to appreciate the rich history and culture around us. It's moments like these that edify the mind, teaching us to appreciate the rich history and culture around us. ऐसे पल हमारे मन को एडिफाई करते हैं और हमें अपने आसपास की समृद्ध इतिहास और संस्कृति की सराहना करना सिखाते हैं। एडिफाई का मतलब है किसी को नैतिक या आध्यात्मिक रूप से शिक्षित करना। As I walk down the street, I notice a narrow alleyway leading to two different paths. As I walk down the street, I notice narrow alleyway leading to two different paths. जैसे ही मैं सड़क पर चलती हूँ, मुझे एक संकरी गली दिखाई देती है, जो दो अलग-अलग रास्तों की ओर जाती है। Alleyway का मतलब है एक संकरी गली। Choosing the left, I step forward and see horse carriages making their way through the bustling street. Choosing the left, I step forward and see horse carriages making their way through the bustling street. मैं बाईं ओर का रास्ता चुनती हूँ और देखती हूँ कि घोड़ा गाड़ी व्यस्त सड़क पर चल रही है। Bustling का मतलब है हलचल भरा और व्यस्त। Such scenes are a catharsis, helping me imagine the life of 19th century London, full of challenges, yet charming in its simplicity. Such scenes are a catharsis, helping me imagine the life of 19th century London, full of challenges, yet charming in its simplicity.
ऐसे दृश्य एक कैथार्सिस की तरह हैं, जो मुझे 19वीं सदी के लंदन के जीवन की कल्पना करने में मदद करते हैं, जो चुनौतियों से भरा है लेकिन अपनी सादगी में आकर्षक है। कैथार्सिस का मतलब है भावनात्मक राहत या शुद्धि। As I walk, I remind myself of an old adage, patience is the key to success. As I walk, I remind myself of an old adage, patience is the key to success. चलते हुए मुझे एक पुरानी कहावत याद आती है, धैर्य सफलता की कुंजी है। Adage का मतलब है पुरानी और प्रसिद्ध कहावत। इस वीडियो में आपने ये शब्द सीखे। Adherent, किसी चीज का अनुयायी। Admonish, चेतावनी देना या सलाह देना। Adage, पुरानी और प्रसिद्ध कहावत। Catharsis, भावनात्मक राहत या शुद्धि। Edify, नैतिक या आध्यात्मिक रूप से शिक्षित करना। Alleyway, संकरी गली। Bustling, हलचल भरा और व्यस्त। अब आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें ताकि आपको बेहतर समझ आए और फिर इंग्लिश कमेंट्री के शब्दों और उनके इस्तेमाल को समझें। This is London, around the year 1888. The city streets are cloaked in a thick fog, and you can see women wrapped in heavy clothing to shield themselves from the cold. Many buildings here have clocks installed on them, ticking away the time. The colors of the buildings vary, some are red, others green, while most are light brown. I find myself drawn to the beauty of London, becoming an adherent of its timeless charm. But even here, there's always a reminder to stay cautious, like someone admonishing you to not get too lost in the foggy streets. It's moments like these that edify the mind, teaching us to appreciate the rich history and culture around us. As I walk down the street, I notice a narrow alleyway leading to two different paths. Choosing the left, I step forward and see horse carriages making their way through the bustling street. Such scenes are a catharsis, helping me imagine the life of 19th century London, full of challenges, yet charming in its simplicity. As I walk, I remind myself of an old adage, patience is the key to success.